Let's first start off with the updates you need to know on the investigation into the Republic Day violence. We've accessed images of 12 vandals who wreaked havoc on the capital streets on Republic Day. The pictures you see on your screens are of these 12 men who are seen holding sticks and other makeshift weapons. The cops have used video analytics techniques to identify these dozen men after scouring through multiple videos of the Republic Day violence. The Delhi police is now trying to identify them through facial recognition system. This comes amid a report that's been submitted by the Home Ministry in Parliament stating that the protesters had aggressively resorted to rioting, had damaged government property and used criminal fare to deter cops from discharging their duties. And all that happened on Republic Day, that issue will be coming up in the Supreme Court today as the Apex Court will be hearing a batch of pleas filed in connection with the violence during the January 26 tractor rally. A bench headed by Chief Justice of India S.A. Bobde will hear these petitions. 3 petitions in all. The first, filed by lawyer Vishal Tiwari, has sought setting up of a 3-member probe panel led by former Apex Court judge and 2 retired High Court judges. The second petition calls for the NIA investigation into the violence, and the third petition has been filed by Advocate M.L. Sharma and has sought a direction to the concerned authority as well as media houses not to declare farmers as terrorists without any concrete evidence. Anisha Mathur is joining us live from the national capital to give us a sense of what's expected in the Supreme Court today. Anisha, good morning. All eyes will be on the CGI-led bench, which will be hearing 3 petitions in all, we understand, all related to the Republic Day violence. Well, yes, these 3 petitions are listed for hearing, but remember there are multiple petitions that were filed regarding the Republic Day violence, most of which are asking for an SIT or an NIA probe. This is the interesting part here. A lot of them have asked for an NIA probe, claiming since there was allegation of links to anti-national activities and for people who were allegedly involved in this entire incident. On the other side, of course, is the petition filed by Advocate M.L. Sharma and some other lawyers as well, saying that this is a way to malign the farmers' protest, that that media should stop calling it a Khalistani involvement, and there should be an NIA or an SIT inquiry to look into exactly what happened. Ultimately, all the petitions that have been filed are asking for an independent inquiry into what exactly happened on 26th of January when the country saw unprecedented and unbelievable scenes of people getting inside the Red Fort and raising a religious flag at the Red Fort premises. So, while some of these petitions are saying that the farmers were not involved, that this was some mischievous elements involved, other petitions are raising the opposite allegations. That all in all are asking for an SIT or an NIA probe into the entire fiasco. Okay, it will be interesting to see what the Supreme Court has to say, considering, as you pointed out, Anisha, you've got a whole bunch of petitions covering a spectrum of allegations, really, over what happened on Republic Day. Now, India's farmers' protests is catching the eyes of international celebrities now. Pop star Rihanna has backed the farmers' agitation in a tweet that she put out on Tuesday evening, sharing an article on the suspension of internet around Delhi's borders. Rihanna questioned why the issue isn't being spoken about. And this tweet that she put out on the farmers' protest really broke the internet. It got more than 35,000 retweets and 60,000 favorites, that's likes, in a matter of just 1 hour. Soon after the pop star's tweet, Kangana Ranaut responded, calling Rihanna a fool, and claimed that the protests are not being spoken about because these are not farmers. These are terrorists, according to Kangana. Environmental activist Greta Thunberg also came out in support of the farmers while attaching a news story about the internet shutdown in Delhi. Greta said, and I quote here, "We stand in solidarity with the farmers' protest in India." This comes after child environmental activist Lissipriya Kangujam had urged global personalities to speak out and to come out in support of the farmers.
So for 70 days now, the farmers have been protesting at Delhi's borders, and BKU chief Rakesh Tikait, who's been leading the protests in some parts, will be visiting Haryana's Jind district to hold a Khap Mahapanchayat in the Kandera village to chalk out measures to intensify the farmer protests that have been raging on at Delhi's borders. Farmers from various areas have started arriving ahead of the crucial Mahapanchayat meet. Tikait's visit comes just hours after he had proclaimed that farmers are in no mood to relent and are ready for the long haul. His visit comes at a time when farmers' protest sites have been fortified using barricades, using barbed wires, along with roads studded with iron spikes in the run-up to a chakka jam or a traffic jam that's been announced by farmers this weekend on February 6th. The Delhi police claims this kind of unprecedented security is to avoid a rerun of the Republic Day violence. जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, ये तो ऐसे कायम नहीं रह सकती ना कभी तो इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। और जैसे सरकार कोशिश कर रही है, आपको भी, आपके साथियों को भी कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी कि इस डेडलॉक से आगे का कोई रास्ता निकले। ये सरकार उस तरह की वो ना सोचे कि किसान कब तक भटकेगा। जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलता, किसान जब तक भटकेगा। देश में किसान बहुत हैं। हमने अक्टूबर तक का प्लान बना लिया है और हमने गांव को कह दिया कि सब लोगों को एक दिन आने की जरूरत नहीं, क्योंकि 26 तारीख में यही हुआ कि सब लोग 26 तारीख की कॉल दे दी, वो एक ही दिन आ गए और फिर वहां से चले गए। तो ऐसा नहीं है। अब हमने शिफ्ट वाइज लोगों की ड्यूटी लगाएंगे। हर गांव से 25-30 आदमी एक प्लान बनाएंगे कि आए और वे 5 दिन रहें, फिर दूसरे लोग आ जाएं, वे अपना चले जाएं। वे तो चला लेंगे, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको चलाने में। अभी हमने अक्टूबर तक का प्लान हम इसको बना रहे हैं। जो इस वाले बॉर्डर से सब लोगों से सब जगह आंदोलन चलता रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक सीनियर मिनिस्टर ने मुझे बताया कि राकेश टिकैत ने हम लोगों से धोखा कर दिया। उनकी हमारे से बातचीत हो गई थी, वो राजी हो गए थे कि वो अपना आंदोलन 26 जनवरी की वायलेंस के बाद खत्म करेंगे और वो वापस जाने को भी तैयार थे। उन्होंने तो एक भाषण भी दे दिया था अपने समर्थकों की, चलिए आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन अभी यहां से हम लोग निकलते हैं। लेकिन फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी सरकार से डील हुई थी, क्या आपकी सरकार से डील हुई थी? अगर कोई डील हुई तो आप वापस क्यों गए उस पर? ऐसा नहीं था। हमने ये कहा था कि उन्होंने कहा कि ये खाली करवाना। हमने कहा कि कागज दिखाओ क्या है आपके पास में। भैया आप खाली करवाना, हमको खाली नहीं करना। आप हमको करो गिरफ्तार, हमको नहीं करना खाली। आप करो गिरफ्तार, हमको लाठियां चलाओ, हम नहीं जाते। आप हमको लाठी चला के और आप हमको घेरो, हमें आप उसमें। आप बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या सबूत है आपके पास कि ये साजिश थी तो किसकी साजिश थी और क्यों साजिश थी, और उसको एस्टेब्लिश करने के पास आपके पास क्या प्रमाण है? तो साजिश ये है कि उसको रास्ता दिया गया वहां से सरकार के द्वारा। उनको कहा गया कि इनको लाल किले पे भेजो, इनको बदनाम करो। ये साजिश नहीं और क्या है ये? मतलब दिल्ली पुलिस को इतना वो कर दिया कमजोर कि वो रास्ता देना पड़ा। जवाब कौन देगा कि दिल्ली में रहते हुए दिल्ली पुलिस कमजोर हुई? कौन जवाब देगा? So as I mentioned now, for 70 days, farmers have been protesting, and because of that, there have been road blockades, traffic diversions, all of which has hit villagers and locals living around the border areas. Local businesses are suffering. It's also created a huge security issue, particularly for women and children living in these areas. For over 2 months, farmers are camping on Delhi's borders, protesting against the new farm laws. With many highways blocked, traffic diversions have hit villages along the route. These are the interior roads along the Delhi-Jaipur highway. Commuters are taking these routes for travel, causing much inconvenience to the local villagers. जो गांव है जयसिंहपुर खेड़ा, इस गांव का नाम है, ये हाईवे से करीब है। अब उसका नतीजा क्या है कि गाड़ियां डाइवर्ट हो गई हैं गलियों के अंदर। अब जब नो एंट्री खुलती है तो इस इलाके से बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं। उसका नतीजा क्या है? क्योंकि यहां पर इतनी जगह तो है नहीं। आप देखिए ऊपर लोगों के घरों के छज्जे तक यहां पर टूट गए हैं, आप ये देख सकते हैं। लोगों ने इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं ताकि गाड़ियों से उनके घरों का बचाव आ सके। आप देखिए
किस तरीके से यहाँ पे पत्थर रखे हुए और गाड़ियां आ रही हैं। अभी पीछे से 4-5 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो हमने पूरी रात जाग करके यहाँ पे ड्यूटी दी है, पूरा जाम खुलवाया, सारे हमारे कहने का मतलब हमारे गांव के सारे रोड तोड़ दिए। People taking these rural roads often get lost, forcing them to knock on the doors of locals at odd hours. ये रात को इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि रात को गाड़ियां ना गांव में घुस जाती है, किसी को पता नहीं हमें जाना किधर है। उसलिए घर के अंदर जाते हैं, दरवाजों को खटखटाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें जयपुर जाना है, हमें दिल्ली जाना है। तो इसलिए इंडिकेशन दिया है, अगर आपको जयपुर जाना है तो आप इधर की साइड जाइए, आपको दिल्ली जाना है आप इधर की साइड जाइए, रेवाड़ी जाना है तो आपको इधर की साइड जाइए। रात को हमें इतनी परेशानी होती है कि हमारा घर रास्ते के साथ हम सो नहीं सकते। Villagers say women fear for the safety of their children, who usually play on these roads. इस जगह पर इतना ट्रैफिक देखा है आपने? भाई कभी भी नहीं देखा, पहली बार ही होया है। यो बहुत इतने दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। बताओ, ये इतने गरीबों आदमियों का घर तोड़वा दिए। अब ये बच्चे आपके छोटे हैं क्या? ये सड़क पे आप निकलने? The people living along highways are now up in arms against the road blockades. Here in Shahjahanpur area of Uttar Pradesh, dozens of villagers have called for the clearing of the highway for the smooth traffic. Around 300 people from nearly 50 villages held a meeting and elected 11 members to negotiate with farmers and local administration. They want at least one side of the highway opened. अब यहाँ पर आप देखिए, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये आसपास के गांव के 42 गांव के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि जो हाईवे बंद है उसकी वजह से इन्हें नुकसान हो रहा है, इनके बिजनेस में, इनके गांव को बहुत सारी। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ के रहने वाले हैं? जयसिंहपुर खेड़ा। अच्छा, यहीं के? हाँ जी। यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? साहब ये रोड खुलवाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, हम परेशान है खेती बाड़ी से भी, और हमारे दुकानें 1.5 महीने से बंद है, बिल्कुल ही दुकान बंद है। हाँ जी। आप भी किसान हो? हाँ जी, किसान है। चाहे प्रशासन बंद करो चाहे अगर हमारा रोड खुलना चाहिए, वैसे चाहे वो बैठो, हम उनके भी पक्ष में नहीं है कि भाई वो मत बैठो, लेकिन हमारा रोड खोल दो वैसे। After the January 26th violence, people living along the highways blocked by farmers' protests are wary of the protests. Now, all eyes are on farmers and administration. Will they work on a formula to mitigate the hardships caused to locals? With inputs from Himanshu Mishra in Shahjahanpur, Bureau Report, India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.